Assalamu alaikum. Your instructor Humair Hashmi on organizational psychology. We are into lecture 6 now, and we have so far touched, to my mind, very important topics related to organizational psychology. कुछ याद है आपको पिछली दफे हमने किस चीज का जिक्र किया था? We talked about diversity. Quickly review the last thing and then something more important today. We talked about diversity. Diversity should not be confused with diversification. याद है आपको? ये भी मैंने आपको बताया था that there are a number of reasons why diversity has become such a hot topic for organizational psychology. Because without diversity's management and encouragement in organizations, the organizations will not flourish, would not become profit-generating, would not become satisfying organizations for people in organizations. That is why diversity has to be not only organized, not only managed, but also has to be encouraged. हमने इसके reasons भी discover किए थे organizational diversity के. Globalization being one of the reasons. और उस globalization की वजह से आपको बताया था एज, जेंडर, एजुकेशन, एथनिसिटी, कल्चरल बैकग्राउंड्स, competitive pressures, internationalization of organizations, all of these were factors that led to diversity in organizations. फिर हमने बताया था माहिरीन नफ्सियात इस diversity को organizations में मैनेज कैसे करते हैं, encourage कैसे करते हैं. और उस रेफरेंस में दो बातें बताई थी, दो अप्रोचेस बताई थी हमने आपको. One that we call the individual approach, where the psychologist learns more, and the other becoming empathetic, और दूसरी जिसको हमने कहा था organizational approach to management of diversity in organizations by psychologists, which related to developing new rules, new systems of behavior in organizations so that diversity can be managed and can be encouraged in organizations. मैंने आपसे ये भी कहा था कि फ्यूचर की फील्ड मेरे ख्याल में, मेरे अदना ख्याल में फ्यूचर की जो फील्ड है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ करियर इन साइकोलॉजी, माय सजेशन एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू यू वुड बी दैट यू शुड गो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. देयर इज ट्रिमेंडस फील्ड, इट्स अ ट्रिमेंडस फील्ड and there are tremendous potentialities in this field. All right, let us go forward today and let us take a look at another very important factor related to organizational psychology, and that is organizational ethics. अब आप पूछने में हक पजानिब होंगे कि ethics जो है वो तो philosophy का हिस्सा है. Why are we studying ethics in psychology? And why are we studying ethics in organizational psychology particularly? इसमें ethics का क्या काम है? आप सोच के बताएंगे मुझे? पहले तो ये बताइए ethics है क्या? जी हाँ, आपने ठीक कहा. Ethics is the right and the wrong of things, behavior, ideas. Ethics is a subject which tells you what is right and what is wrong. With ethical standards, human beings distinguish between the right and the wrong, the negative and the positive, the black and the white. That is what ethics is. But then, why should organizational psychologists be related to, be interested in ethics? क्या आप इसका कुछ जवाब दे सकते हैं मुझे? इसलिए कि there are certain right things in the organization and there are certain wrong things in the organization.
use of power, for instance, in an organization, may be right or may be wrong. Power in an organization in the hands of a group or a person has to be very, very stringently affected, controlled by ethical standards. Why? Because power in the hands of one person or a group of people in an organization may destroy an organization or may lead an organization to a higher plane. That is why ethics must guide power in organizations. We distinguish between negative and positive power in organizations. We will talk about that in great detail when we come to power politics in organizations. But for the time being, just to clarify the point of ethics with you, I'm giving you this example. Suppose a group or one person gains power in an organization, and then that group or that individual uses that power to advance limited group ends or individual ends. What will happen? The organization will be destroyed, because that powerful individual or that powerful group is not using the power that they have and or he has for the benefit of everyone in the organization, but for the benefit of only a few people or only one person. Thus, other people are suffering. Thus, all positive elements that come out of organization are going in the direction of the powerful group or the powerful person. Therefore, power in the hands of a group or a person in an organization with ethical disregard is a very dangerous thing. And that is why ethics must be kept in mind in organizations. हम इसको डिटेल में भी इसकी बात करते हैं, लेकिन क्या ये एथिक्स जो है, जो स्टैंडर्ड्स हमें बताती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, इज इट ए परमानेंट थिंग और इज इट ट्रांजिटरी और टेम्पररी? वेल, the ethical standards may change, may modify from time to time, but ethics and ethical standards remain. The nature may modify itself, but the standards remain. पहली तो बात ये समझने वाली है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स से मुतल्लिक. दूसरी बात है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स से मुतल्लिक समझने वाली ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स जो है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय cultural factors, organizational factors, as well as personal factors. इससे क्या मुराद है कल्चरल फैक्टर्स से? आप पढ़ के आए अभी, पिछले 2-4 लेक्चर्स में आपने देखा that organizations are becoming internationalized. One organization may be spread over many geographical regions, and therefore it may have many people who belong to many cultures. Do you think the ethical standards for all cultures are identical? Absolutely not. There are slight differences. Of course, the overall standard of right and wrong is the same, but within that larger parameter, larger boundary of right and wrong, there are differences across cultures in ethics. इसी तरह से there are differences in organizational ethics. Some organizations demand more strict ethical behavior. In certain restricted areas, they demand ethical behavior. In certain other areas, they may be a little bit lax. Also, in terms of personal factors, ethics may vary. A person may have standards today in an organization
And tomorrow his standards may be slightly different than his standards of right and wrong which were yesterday. He may consider, for instance, employing, let us say, young females in organizations against the organizational policy at some stage, but under the influence of diversification and globalization, he has to begin to employ young females also. So his ethics in terms of employment of females, which he considered wrong at a particular time in his life, let us say 20 years ago, he now considers the same standard acceptable. So ethics within a large parameter may be modified, may change. चलिए अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या खास एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हैं और क्या क्या उनके असरात हैं. सबसे बड़ी बात जो है वो ये है that because of the spread of technological advancement, because of opportunities, educational opportunities and skill development opportunities, because of training opportunities, because of such technological advancement as virtual university, more and more females are being qualified all over the world. This is more so in areas of the world like Pakistan. But it is all over the world. More and more females are becoming more qualified, more technically trained, more skillful, more proficient. Therefore, they are entering the job market. That's one thing that you have to keep in mind. Another thing that you have to keep in mind is that organizations are rapidly expanding under the influence of globalization. Therefore, job opportunities are emerging. अभी यहीं आप पाकिस्तान का सीन ही देख लें कि पिछले 10 वर्षों में there are many multinationals that have entered into the Pakistani market, and because of those entries into the Pakistani market, more and more job opportunities have evolved. वो क्या है जो multinationals enter हुए हैं, that's another thing, that's another matter. The crux is that multinationals have entered Pakistan, and as a result of that, more and more job opportunities have emerged, and therefore, because of the highly trained and skilled and educational backgrounds of females now, females are entering job markets. Therefore, the ratio of male-female employment in organizations is not the same that it used to be, let us say, 2 decades ago, 20-25 बरस पहले पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में ख़वातीन बहुत कम थी और अब पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में ख़वातीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है. And that ground reality has given rise to a problem that organizational psychologists have to deal with, that comes under the influence of ethical behavior in organizational psychology. What is that? Sexual harassment. As you can see on your screens there also and behind me, sexual harassment. Sexual harassment refers to unwelcome advances from the opposite gender. That is what sexual harassment means. Research shows that about 3/4 of working women across the globe feel sexually harassed in organizations. ये statistics जो हैं, ये अमेरिका, यूरोप और बाकी मुल्कों को मिला के हैं, that 3/4 of females feel that they have been exposed to sexual harassment in organizations. Sexual harassment of females is a very important issue
in organizational psychology, which is related to organizational ethics. What is right and what is wrong determines whether a female is sexually harassed or not sexually harassed. And that is where ethics come into organizational psychology. बहुत से मुल्कों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्लियर डेफिनेशन बनाई है और बेस्ड अपॉन दैट डेफिनेशन उन्होंने क्लियर लॉज बनाए हैं वेयर सेक्सुअल हैरेसमेंट इज फॉरबिडन एट वर्क प्लेस. वी नीड टू डू द सेम थिंग इन पाकिस्तान ऑल्सो. Another thing that organizational psychologists have done in this regard is to adopt strategies by which sexual harassment can be discouraged, is discouraged. That is empowering women. इनकी डिटेल में भी बात करेंगे. वैसे आपका जो कोर्स है जेंडर इश्यूज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, उसमें भी आप ये डिटेल से पढ़ेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अब अभी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं एंड वी आर जस्ट टचिंग अपॉन एथिक्स एंड वी आर टचिंग अपॉन सेक्सुअल हैरेसमेंट इन रिलेशन टू एथिक्स, सो वी विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. Laws have been crafted, laws have been put into operation where sexual harassment is clearly defined, its operations are clearly defined, and its punishments are clearly given if anybody indulges in sexual harassment. Another thing that psychologists are doing related to sexual harassment is psychological counseling. A person who feels sexually harassed is counseled how to prepare oneself for defending against sexual harassment in organizations and how to discourage people, other people, from sexually harassing somebody in an organization. That is what organizational psychologists are doing. अब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो सिर्फ एक एथिकली बुरी चीज नहीं है, बल्कि इसके अलावा एथिकली तो बुरी चीज है ही वो, लेकिन इसके अलावा it is also poisonous for the organization from a psychological point of view. And why is it poisonous for an organization from a psychological point of view? Because sexual harassment discourages people, because sexual harassment demotivates them, because sexual harassment brings down their morale. All of these factors result in low job satisfaction, dissatisfaction with the organization, lack of group cohesion. All of these factors result in low productivity per head and from the point of view of the organization. Therefore, sexual harassment is like poison in an organization. So not only sexual harassment is unethical, वो तो है ही, it is also bad for the smooth working of the organization. People become discouraged, demotivated, demoralized, and they do not give in their best to the organization. That is why psychologists have to fight this evil of sexual harassment in the organization. That's one thing related to organizational ethics. दूसरी चीज जो इससे मुतल्लिक है, 4 चीजें हैं टोटल. दूसरी चीज जो इससे मुतल्लिक है, that is pay and promotion discrimination. Worldwide research related to organizational psychology shows that women and minorities are paid about 60% of what
the majority and men get paid for the same amount of qualification and the same amount of experience. कैसी अजीब व गरीब बात है ये. तमाम दुनिया में जितनी रिसर्च की गई है, अगर हम उसको यकजा करें तो हमें क्या दिखता है? दिखता है कि अगर एक मर्द को 100 रुपया तनख्वाह मिलती है तो एक औरत को 60 रुपए तनख्वाह मिलती है. When that woman is qualified as much as the man or any given men, any given group of men, as well as when they have the same experience. ये सिर्फ जनरल जॉब्स का है. प्रोफेशनल जॉब्स का भी देखिए किस्सा. Professionals such as lawyers and doctors in organizations, related to organizations. Research shows that women lawyers and doctors are paid 75 rupees or dollars for every 100 rupees or $100 that are paid to men doctors or men lawyers, when men doctors and men lawyers have the same qualification and the same experience as women. This is what is called pay discrimination. United Nations के फिगर भी यही शो करते हैं that there is a 30% less on the average, 30%, between 30 to 40% less pay is received by females in organizations as compared to males, when females and males have the same quality of experience and the same standard of education. तो ये बात जो है, अब this is beyond any shadow of doubt that women are discriminated against in terms of pay. This is unethical. Organizations pay less to women and organizations pay more to men. This is totally unethical. And as I said earlier, not only is it unethical, not only is it wrong, it is also bad for the organization. It breaks down the morale of the people working in the organization, particularly women or those belonging to minorities. It dissatisfies them. It gives them a feeling that a sense of fair play and justice does not prevail, that organizational policies discriminate against them, and that discourages. We know from our own researches in this context that a discouraged, demotivated worker, demoralized worker is a dissatisfied worker, is a non-productive worker, is a worker who is not functioning at the height of his potential. Therefore, it is a disadvantage to the organization as a whole to have a worker or a set of workers or a majority of workers who are dissatisfied, demoralized, and do not have job satisfaction. Although the organization may save some money in terms of actual pay, but in the long run, the organization is suffering a greater loss. And that is what psychologists have been able to point out to people who are responsible for making policies in organizations, that it might be advantageous in the short run to pay less to women, to pay less to minorities, to pay less to weaker people in organizations, but in the long run, the organization will suffer. The organization will go down because minorities, women who are paid less, are going to be dissatisfied workers. So, not only is it wrong, not only is it ethically unacceptable, it is also bad business for organizations to discriminate in terms of pay. एक और reference जो है इसमें, that is
discrimination in promotion. मैं आपकी तवज्जो इस रेफरेंस में एक ख़ास टर्म की तरफ मबजूल कराना चाहूँगा, और शायद आपने वो टर्म पहले भी सुनी हो, शायद नहीं, जो आपने यकीनन सुनी होगी, एंड दैट टर्म इज ग्लास सीलिंग इफेक्ट. Glass ceiling effect refers to an invisible barrier that is put in the upward mobility of females, minorities or weaker workers. जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो छत है शीशे की बनी हुई, वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन minorities, women या weaker segments of organizations are not allowed to get promotion beyond that ceiling. That is called the glass ceiling. And the glass ceiling effect is when women or minorities or people who are in the weaker section do not get promotion which is proportionate to or equal to the promotions given to other people in the organization. That is what glass ceiling is. Glass ceiling may be a concept in psychology. In organizational psychology, it is very real. It exists, that women are discriminated against, and that is unacceptable, and that is unethical. And that is what organizational psychologists have been able to point out. Glass ceiling effect can be removed, psychologists have pointed out, by a number of strategies. Number one, gender sensitization. Getting people in the senior positions, people who make policies, people who make rules and regulations of the organization, getting them to be sensitized about how glass ceiling effect is operating and how this glass ceiling effect operation may jeopardize, may be a hindrance in the smooth functioning of an organization. मैंने आपको अभी बताया कि अगर ख़वातीन जो हैं वो अपनी पे से मुतल्लिक और अपनी प्रमोशन से मुतल्लिक, if they feel discriminated against in terms of their pay, और वो ये भी समझती हैं कि उनकी प्रमोशन जो है वो उतनी रैपिडली नहीं हो रही जितनी उनकी मर्द कोलीग्स की हो रही है, तो फिर वो बेइत्मीनानी का शिकार हैं, मायूसी का शिकार हैं रिलेटेड टू देयर जॉब्स, फिर वो जॉब डिससेटिस्फैक्शन का शिकार हैं, फिर वो डीमोटिवेटेड हैं. और अगर ऑर्गेनाइजेशन में ख़वातीन जो हैं वो डीमोटिवेटेड हैं, वो डीमोरलाइज्ड हैं, वो डिससेटिस्फाइड हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का वक्त, ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिविटी ज़ाया हो रही है. That is what psychologists have been able to point out. So, sensitization is one technique. Another technique of removing the glass ceiling is what's called the seeding strategy. Seeding strategy is deliberately putting women in important decision-making senior positions in organizations. One way of removing the glass ceiling is to be sensitized about the glass ceiling, and another is to put women in decision-making processes. अभी आपको मालूम है पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान में women have been put into decision-making positions in the provincial assemblies and in the national assemblies, and that is an example of seeding strategy. Another technology of removing the glass ceiling effect is what's called gender training, to sensitize people in the organization to deal with opposite genders. And that is what psychologists have been able to do. This is the second thing that we need to know about in relation to ethics in organizational behavior. Organizational ethics से मुतल्लिक
जो तीसरी चीज है, दैट इज प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय प्राइवेसी। इसका क्या मतलब है, और ये हाउ इज इट एन एथिकल इशू एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी? वेल, लेट अस ड्वेल ऑन दैट ए लिटिल बिट। जब कोई शख्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन देता है, चाहे वो स्कूल है या अस्पताल है या जूते बनाने की फैक्ट्री है, कमीजें बनाने की फैक्ट्री है, घड़ियां बनाने की फैक्ट्री है, कालीन बनाने की फैक्ट्री है, टेलीविजन स्टेशन है, जहां भी कोई एयरलाइन है, रेलवेज है, जहां भी एप्लीकेशन देता है, उस एप्लीकेशन में उस शख्स के बारे में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तमाम डिटेल्स मौजूद हो जाती हैं। और वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में चली जाती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में ये तमाम मालूमात मौजूद हैं कि एक शख्स पैदा कब हुआ था, एक शख्स ने शादीशुदा है या नहीं, अगर शादी है तो डाइवोर्स्ड है या शादी चल रही है, अगर डाइवोर्स्ड है तो कितनी डाइवोर्स हुई थी, उसको कोई सीरियस बीमारी हुई, अगर सीरियस बीमारी हुई तो कब हुई और कैसे हुई, क्या उससे उसने निजात हासिल कर ली, क्या वो कोई अद्वियात का, मंशियात का इस्तेमाल करता है, क्या उसके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान या अपने मुल्क में हैं या कहीं और हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उसका बैंक बैलेंस क्या है, वो बैंक कहां कहां कर रहा है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर में मौजूद है। ये तमाम इंफॉर्मेशन निहायत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकर्स और ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल बंदों का रोल है, उनका ये फर्ज है कि इस इंफॉर्मेशन को जो एम्प्लॉय से मुतल्लिक है उसको प्रॉपरली गार्ड करें। अगर वो ऐसा नहीं करते, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाम लिए बगैर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ऐसा नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर एक शख्स को अपनी जॉब में इंक्रीमेंट मिलता है तो ये इंफॉर्मेशन भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये इंफॉर्मेशन जो है ये कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को पास ऑन कर देती हैं। मिसाल के तौर पर किसी इंश्योरेंस कंपनी को कि हमारे एम्प्लॉय को इतने पैसे की इंक्रीमेंट मिली है, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कोशिश इस बात का करती है कि वो उस इंक्रीमेंट में से, उस इंक्रीज्ड पे में से जो शख्स को अवेलेबल है उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे दे, ताकि पार्ट ऑफ दैट इंक्रीज इन पे इज टेकन ओवर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मैं एक मिसाल देके बता रहा हूं, ये ऐसा हो रहा है। मैं सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में नहीं कह रहा, मैं मिसाल के तौर पर आपको ये बात कह रहा हूं। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स अगर अपना प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं, वो किसी जगह इस्तेमाल करता है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस जगह वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ है, वहां उस कंपनी या उस दुकान या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास उस शख्स का क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया है। दैट क्रेडिट कार्ड नंबर इज लाइक ए लाइसेंस, इट कैन बी मिसयूज्ड। Of course, it is unethical. Of course, there are now laws against that all over the world. It is like theft and robbery, but it is also unethical. तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है, मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स जो है जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके फॉर्म में उससे पूछा जाता है, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में, कि क्या तुम कोई ड्रग्स इस्तेमाल करते हो या तुमने की है, और अगर वो ड्रग यूजर है या रहा है कभी पास्ट में तो उसको लिखना होता है। अगर वो ऐसा नहीं लिखेगा तो वो ही वुड बी कॉट इन लाइंग एंड चीटिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो ही हैज टू डिक्लेयर। इफ ही डिक्लेयर्स दैट इंफॉर्मेशन may be misused, may not be properly protected by the organization, and that is unethical.
So, employee privacy is a most sensitive issue because of the intervention of IT, information technology. The topic of employee privacy has become even more pressing. If it is not properly protected, hackers may break into the mainframe computers of any company and may gather information which the company should keep private and may misuse that information. So it is most important for organizations to have policies in place that protect the employee privacy. Employee privacy से related एक और अहम बात जो ये है वो है employees' lifestyles. Employees' lifestyles are also part of the privacy of the employee. And that is evident to the employer. Organizations में lifestyles के बारे में भी organizations को इल्म है. Whether the person was ever an alcoholic abuser, whether the person does or does not suffer from, God forbid, HIV/AIDS. These are very sensitive issues. And these affect the lifestyles, not only the lifestyles, but the future. Another important issue related to this is whether the person has ever been accused or ever been arrested or tried and convicted for criminal offenses or a criminal offense. That information is also available to the people in the organization. And these are very, very sensitive issues that affect the entire life of the employee. And that needs to be very carefully monitored and very carefully handled. And that is, if these issues and these matters are not carefully protected, and if the employee privacy is not protected, that is an unethical practice adopted by the organization. And that is unacceptable in any given organization. चौथी चीज जो बहुत अहम चीज है, that is related to ethics in organizations, that relates to research in organizations. All modern organizations undertake research. They have to undertake research for their own benefit and to keep their competitive edge with other organizations. Because they have to undertake research, then the danger of adopting unethical research practices looms very large on their heads. What are unethical research practices? Unethical research practices relate to some that is related to the practice of research and some related to the publication or usage of research. पहले तो मैं बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशंस को रिसर्च करनी जरूरी क्यों है. एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है, उनके लिए जरूरी है कि वो देखें कि कौन सा साबुन पसंद किया जा रहा है. उनके लिए जरूरी है कि वो ये देखें कि उनको एडवर्टाइजिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए. एक दूध बेचने वाली कंपनी है, उसके लिए जरूरी है ये जानना कि वो देखे कि किस किस्म का दूध पिया जा रहा है इस शहर में या इस मुल्क में. क्या गवाला मिल्क पिया जाता है या पैकेज्ड मिल्क पिया जाता है? गवाला मिल्क के लोग पसंद करते हैं या पैकेज मिल्क को पसंद करते हैं. एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, उसको ये देखना है कि कितने लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं और वो किस किस्म का सिगरेट पीते हैं. एक ब्लेड बनाने वाली कंपनी है, उसको देखना है कि वो ब्लेड किस किस्म का ब्लेड बनाए. एक अस्पताल है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको ये देखना है कि उनके लोग, उनके क्लाइंट जो हैं वो किस किस्म की सर्विसेज पसंद करेंगे, वो क्या क्या चाहते हैं, उनके कंपेटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं.
अगर एक प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल है तो उस अस्पताल के ऑर्गेनाइजर्स के लिए जरूरी है कि वो देखें कि बाकी अस्पताल जो शहर में हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है, वो किस तरह के हैं, ताकि अपना अस्पताल जो है वो उस लेवल का हो। तो इसलिए चाहे कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या अस्पताल, या प्रोडक्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, साबुन बनाने की फैक्ट्री या परफ्यूम या ब्लेड बनाने की फैक्ट्री या दूध बनाने का कोई प्लांट, दूध पैक करने का प्लांट, इन सब के लिए जरूरी है कि वो रिसर्च करें। और रिसर्च जो है वो हर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब देखने वाली बात यह है कि जब हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं तो इसमें बहुत से एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। नंबर 1 इशू कि जो रिसर्च सब्जेक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको कोई हार्म नहीं आना चाहिए। अगर एक ब्लेड बनाने वाली कंपनी ऐसा ब्लेड बनाती है जिसके इस्तेमाल से आपको कट लग सकता है तो ये अनएथिकल रिसर्च का हिस्सा होगा। दूसरी बात ये इसी से रिलेटेड कि ऑर्गेनाइजेशन को ये जरूरी है, देखना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो जिन लोगों पर रिसर्च कर रही है उनको पूरी तरह से बताए कि रिसर्च क्या है, इसके मकासद क्या हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती तो ये डिसेप्शन के हिस्से में आता है, धोखाधड़ी के जिम्मे में आता है, विच इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। फिर ये कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी रिसर्च के बेनिफिट्स जो हैं वो शेयर नहीं करती अपने लोगों के साथ जिन्होंने रिसर्च में हिस्सा लिया तो वो भी अनएथिकल है। ये 3-4 चीजें हैं जो रिसर्च की ऑपरेशन से, प्रोसीजर से मुतल्लिक हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो रिसर्च के लेटर हाफ से मुतल्लिक हैं जिनको हम डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स कहेंगे या पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट कहेंगे। इसमें सबसे अहम इशू जो है दैट इज द इशू ऑफ प्लेजरिज्म, कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च की और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पैसे देके या उनको किसी तरह से रिसर्च के रिजल्ट्स ले लिए और खुद उनसे फायदा उठा लिया, किसी किस्म का फायदा भी। मिसाल के तौर पर अगर कोई यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट्स से रिसर्च कराए और फिर अपने नाम से वो आर्टिकल लिख के किसी अखबार में या रिसाले में या किताब में प्रिंट कर दे तो ये प्लेजरिज्म के तहत आएगा। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कराए, मसलन साबुन से मुतल्लिक रिसर्च कराए, मसलन ये देखे कोई ऑर्गेनाइजेशन ये देखे कि टीवी के प्रोग्राम जो हैं वो कितने लोग, कितने फीसद, कौन सा प्रोग्राम किस वक्त देखते हैं, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन उससे पैसे दे के खरीद ले इस इंफॉर्मेशन को या वहां से चोरी कर ले, तो दैट वुड कम अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ प्लेजरिज्म, एंड दैट इज अनएथिकल because it is like stealing, and stealing is unethical. So the fourth thing that is related to organizational psychology and that is related to ethics and ethical standards in organizational psychology is ethical practices of research in organizational psychology. इस ज़िम्न में मैं आपसे एक और बात भी बताना चाहूंगा, और वो ये है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में एथिकल कमेटीज फॉर्म हो चुकी हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में एथिकल प्रैक्टिसेस का मवाजना करती हैं, उन पे चेक रखती हैं और उनको डायरेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को और लोगों को और ग्रुप्स को इन ऑर्गेनाइजेशंस हाउ टू मेंटेन एथिकल, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। साइकोलॉजी से मुतल्लिक मैं आपको रेफरेंस दूं कि इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। व्हाट इज ethical standard in psychology, what are ethical standards in psychology, related to research, related to psychologists appearing on television, related to psychologists selling themselves, giving their own advertisements,
related to how their degrees are promoted, how their educational qualifications are promoted, related to their giving advice to marketing, all of these, related to scientific researches, related to other procedure and researches, all of these are controlled by ethical committees in psychology. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई एथिकल कमेटीज साइकोलॉजी में नहीं बनी. पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के साइकोलॉजिस्ट के जो एसोसिएशन है वो इस पे काम तो कर रहे हैं. पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो इस पे काम तो कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी एथिकल कमेटी नहीं बनी. पाकिस्तान में अभी तक एथिक्स इन साइकोलॉजी पे कोई कोर्स भी नहीं बना था. मैंने था का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि अब जो नए कोर्स शुरू हुए हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, there is a course on ethics in psychology which is a compulsory course in all undergraduate students seeking a degree in psychology. So now ethical standards and ethics in psychology is a compulsory paper in undergraduate degrees in psychology. Hopefully, our Psychological Association of Pakistan would also be able to adopt the same procedures and develop protocol of ethical standards for psychologists in Pakistan. It is a very, very important topic related to organizational psychology. Chaliye, before I end today, let us see what we talked about. We have talked about the ethics in organizational psychology today. In that context, we talked about what is ethics, and why organizational psychologists are so concerned with ethics today. We saw that ethics is the right and the wrong of things and variables. So, when we are talking about ethics related to organizational psychology, we are talking about what is wrong and what is right in psychology in organizations. In that context, we saw 4 things that organizational psychologists deal in within the larger framework of ethics in psychology. The first of this was, you recall correctly, the problem of sexual harassment in organizations. Sexual harassment, you recall, of course, is related to unwelcome advances by the people of the opposite sex. दूसरी चीज जो हमने इससे मुतल्लिक इस किस्से में देखी है, that was pay and promotion discrimination. We saw that generally speaking, women are paid less than men in organizations. And generally speaking, women do not get rapidly promoted beyond certain levels in organizations. In that context, I talked about the concept of glass ceiling effect. तीसरी चीज जो हमने देखी थी वो थी employee privacy, the ethical issues related to employee privacy in organizations. How employees' privacy may be compromised in organizations and how psychologists may intervene so that privacy of the employees in organizations is not compromised, it is protected. And the fourth thing that we saw in that regard in ethical standards was ethical standards related to psychological research in organizational psychology. इस reference में हमने आपसे बताया था that all organizations have to and do undertake research. And when they have to and they do undertake research, then all the ethical issues related to research procedures, जो आपने पढ़े भी होंगे research के पेपर में, statistics के पेपर में, all of those ethical issues come to the fore, such as the harm should not come
to the people taking part in the research, that their privacy should not be compromised, that the research results must not be stolen, must not be misused, that due credit must be given to the researchers, that the researchers make sure that their research is not stolen by other people. These are all issues related to ethics, and these are all issues related to research, related to organizational psychology. These are the 4 things that we talked about related to ethics in organizational behavior, organizational psychology. Next time, we will take up another important topic in this regard. Hopefully, what we have done today related to ethics in organizational psychology, you will take a closer look and you will give it a lot of thought, whether it is good to be ethical or it doesn't matter. You have to give it a good thought. I have stressed upon the point that being ethical is good business, pays you in the long run. Being unethical may be a short-term gain, but in the end, in the long term, in the long run, it is always bad business. So my suggestion and my advice to you would be, do not indulge in unethical practices as psychologists. Until next time, Khuda Hafiz, God be with you.